तो आप बात कर रहे थे डोमिनेशन की. यू सी हाउ इंडिया इज डूइंग द डोमिनेशन हियर. साउथ अफ्रीका की सभी जीत जो अभी तक उनको टूर्नामेंट में मिली थी एक्सेप्ट नीदरलैंड्स एंड इन टुडेज मैच, आई थिंक सबका एक साथ बदला निकाल लिया. बिकॉज आई थिंक जिस तरीके से इंडिया खेल रही है अभी, पास्ट 2 मैचेस की बात करें, आज का मैच और प्रीवियस मैच, बड़ी जीत हासिल लगी है. 200 प्लस रन से मुकाबला जीत रहे हैं. दिस इज समथिंग लाइक एक्सेप्शनली डिफरेंट लेवल. We were talking about कि इंडिया में आकर के साउथ अफ्रीका द वे दे आर प्लेइंग समथिंग वेरी मच डिफरेंट. एंड आज इंडिया ने जैसा डोमिनेशन दिखाया है, इट शोज कि ओके we both are the table toppers, but here I'm gonna dominate. And आज हमने जो इंडिया की तरफ से शो देखा, भले चाहे हम बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, it has been something जो हर एक इंडियन फैन को अभी लिटरली गूज़बम्प देना शुरू कर चुका है. And I don't see अभी यहाँ से कोई coming back है, going back है. There is nothing like that. I'm here to discuss the same with Vijit. This jeet with Vijit. But the kind of match India has played, I don't want to say much about it, but I want to take your opinion on this. Do you see anything going wrong for India, or everything is just right? Almost everything is just going right at the moment. मतलब it is hard to believe कि इतना sort of almost perfect जैसा परफॉर्मेंस हर मैच में ऐसा कैसे हो रहा है और ऐसा चलता रहेगा क्या, वो थोड़ा नर्वस वाला क्वेश्चन है हमारे लिए. बट या इट्स जस्ट फैंटास्टिक, लाइक द वे वी स्टार्टेड, द वे द ओपनर स्टार्टेड द इनिंग्स. I think it was 91 something in after 10 overs with the loss of Rohit Sharma's wicket. So उतना जो फास्ट स्टार्ट दिया, इतना जबरदस्त, हर ओवर में 1-2 बाउंड्रीज आ रही थी. That was a dominating start, एकदम एक स्टेटमेंट वाला स्टार्ट था कि हम आए हैं आप यहाँ पे, whoever the bowler is, we are just going to bash them. तो इस तरह का जो एटीट्यूड लेके आए थे, जो एक किलर इंस्टिंक्ट जो था ओपनर्स में, वो जबरदस्त था. एंड दैट कैरीड फॉरवर्ड लेटर ऑन एज वेल. थोड़ा then the bowlers made a comeback, South African bowlers made a comeback, spinners आए, महाराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की. शबमन गिल का जो विकेट लिया, वो बॉल तो बहुत जबरदस्त था. जो फ्लाइट आया, ड्रिफ्ट हुआ, टर्न हुआ, वो परफेक्ट था. पेल को ऐसा ट्रिम करके गया. इट वाज फैंटास्टिक टू सी दैट. सो स्पिनर्स के लिए काफी हेल्पफुल था विकेट, एज वी आल्सो सॉ इन द सेकंड इनिंग्स. जडेजा ने 5 विकेट हॉल लिया. So that actually slowed down the Indian innings at that time. But again, the quality that we had, सारे फॉर्म में है. विराट कोहली 100 again, and श्रेयस अय्यर का 50 हुआ वापस से. And they are scoring fast. श्रेयस अय्यर is scoring fast. विराट कोहली थोड़े slow थे, and he played that anchor role. He kind of decided at some stage that he'll stay there till the 50th over. तो श्रेयस अय्यर थे. देन इवन सूर्य कुमार ने भी एक अच्छा कैमियो खेला 22 रन्स का 14 बॉल्स में. जडेजा आके उन्होंने भी एक कैमियो खेल लिया. सो एवरीवन पिच्ड इन एंड इट वाज अ कंप्लीट परफॉर्मेंस व्हेन इट कम्स टू बैटिंग एज वेल. फिर बॉलिंग की तो क्या बात करें, मतलब हर मैच में ऐसे जलते दिखा रहे. इट इज रियली फैंटास्टिक टू सी एज एन इंडियन क्रिकेट फैन की इंडियन बॉलर्स, फास्ट बॉलर स्पेशली, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. बट today it was, I think they set the platform for Jadeja, शमी ने और सिराज ने जो शुरू में बॉलिंग की. then they set the platform for the spinners, और जडेजा ने आके फिर जो कमाल दिखाया और wrap up कर दिया साउथ अफ्रीकन इनिंग्स को. so yeah, it was fantastic performance, again a fantastic performance, and I see India winning the next match as well and finishing at the top. So they might be finishing first. One match at a time. Let's not go too far about it, because whenever we have done that, we have seen in the past, हमें सिर्फ आखिर में anxiety ही मिलती है और कुछ नहीं. So let's take one match at a time. That will be good for all of us. और वैसे तो बहुत ही अच्छे से विजीत ने sum up कर दिया, but I'm still gonna show you the match summary, how this match panned out in terms of numbers. So ये मुकाबला खेला जा रहा था ईडन गार्डन्स कोलकाता में. इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, और ये फैसला इतना बेहतर निकला कि साउथ अफ्रीका के पास उसका कोई जवाब नहीं था. इंडिया की तरफ से 326 रन्स स्कोर हुए आउट ऑफ 50 ओवर्स, 5 विकेट के नुकसान पे, जहां विराट कोहली ने 101 रन्स बनाए, श्रेयस अय्यर ने 77 रन्स बनाए, केशव महाराज ने 1 विकेट लिया 30 रन देकर, लुंगी एनकेटी ने 1 विकेट लिया 63 रन्स देकर. आफ्टर ऑल साउथ अफ्रीका जब इस बड़े टारगेट को चेस करने उतरी, उन्हें खुद की ही मेडिसिन का स्वाद चखने को मिला. एक बड़ा टारगेट और आप उससे चेस नहीं कर पाए. 83 रन्स पर ऑल आउट हो गई 27.1.
ओवर्स में। मार्को येंसन ने यहाँ पर सबसे ज्यादा रन बनाए हैं 14 और 13 राशि वेंडर से। रविंद्र जडेजा का 5 पर, कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए, 7 रन देकर, और इंडिया ने 243 रन से मुकाबला जीत लिया। दिस इज समथिंग जहां पर साउथ अफ्रीका में एक बात ये भी कही जा रही है साउथ अफ्रीका को लेकर के, इफ यू मैनेज टू स्टॉप क्विंटन डी कॉक देन द हाफ बैटल इज वन। एंड आज वही हुआ इंडिया के एंड से कि जब चेस करने साउथ अफ्रीका उतरी, सो क्विंटन डी कॉक को बहुत ही सस्ते में चलता किया, और उसके बाद में फिर हम देख सकते हैं बैक टू बैक जिस तरीके का हमें, I would not like to use this word choking, but yeah, somehow you see them जब भी टूर्नामेंट्स अपने क्लोजर एंड की तरफ जाता है, साउथ अफ्रीका starts to show such signs, और हमें भी आज यही देखने को मिला। Now let me take you to the top performers of the first inning and second innings as well. So first inning में हमने देखा top performers from both the ends. First is Virat Kohli taking 101 runs. उन्होंने अपनी 49th ODI सेंचुरी कंप्लीट करी अपनी बर्थडे के दिन, और साथ ही इनका इसके साथ 79 का टैली हो गया है ओवरऑल इंटरनेशनल सेंचुरीज का। और केशव महाराज जिन्होंने 1 विकेट लिया 30 रन देकर आउट ऑफ 10 ओवर्स, ही वाज द मोस्ट आई वुड से इकोनॉमिकल फ्रॉम साउथ अफ्रीकन एंड। Now if we take to the second innings, तो वहां पर आपको पूरा ब्लू दिखाई देगा क्योंकि रविंद्र जडेजा का 5 पर है और कुलदीप यादव के 2 विकेट है at such economical rate. Now Abhijit, I think this comes up with the question that is it like India is such a team जो कि अपनी घर पे जितने लीथल है उतना कोई भी नेशन अपने घर पे नहीं। Is it like that? Or do you see some other teams being more impactful or more lethal than India at their home? Teams have that advantage, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि only India is the one who dominates this much at home, but we have seen like maybe in different formats, not in ODI cricket, जैसे इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट में dominate करता है काफी हद तक के when they play at home, even Australia does the same, न्यूजीलैंड कुछ हद तक के वो भी करता है, so yeah, that would be related to test matches, but when it comes to limited overs cricket, this kind of domination is quite rare to see sometimes, because bilateral cricket में आप खेल लेते हो, you don't have this kind of pressure, इतना लंबा streak जो winning streak है वो बनता भी है, but again that pressure is different, और ये जो world tournament का pressure है when you're playing different teams in every match, तो वो उसका एक अलग उसका चीज होता है, so that is difficult in some sense, you're not playing the same opposition all the time, so again it is special, and yeah, I would say it is इतना थोड़ा जो domination अभी चल रहा है, it is quite great. राइट, और इवन अगर हम लोग वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट की बात भी करें तो आई डोंट थिंक सो कि वैसे ये डिस्कशन का पार्ट है, बट स्टिल आई वांट टू ब्रिंग दिस अप बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल in our comment section as well and everywhere, like former cricketers as well from Pakistan specifically, I would say they are just simply questioning India का pitches कि जब भी इंडिया खेलती है तो it's like वो बैटिंग होता है, जब वो लोग बैट कर रहे होते हैं बैटिंग फ्रेंडली हो जाती है, फिर बॉल करने आते हैं तो बॉलिंग फ्रेंडली हो जाती है। I think I really need to give some answer to them. Vijit, would you like to tell them some suggestions कि ऐसा है ना कि it's cricket, it's ICC event, it's not like nothing less than that, and we should be understanding like उसका खुद की भी अपनी रिस्पेक्ट उस इवेंट की, और जिस तरीके से इंडिया उसको होस्ट करी, इट इज बीन सो ब्यूटीफुल, सो ग्रेट। इट्स जस्ट दैट द टीम इज डोमिनेटिंग दिस मच दैट यू आर पुटिंग क्वेश्चन ऑन अननेचुरल थिंग्स व्हिच कैन नॉट हैपन, व्हिच जस्ट सिंपली कैन नॉट हैपन। So this is from like my end. What do you think about those? How will you answer those? Like when the people point out questions over how BCCI is hosting the event and how they are doctoring the pitches, maybe? I don't know. No, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। पिचेस के बाद तो मुझे तो नहीं लगता, पिच तो सबके लिए सेम ही है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो इंडियन टीम को ही ज्यादा सूट करती है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। पिचेस काफी हद तक सबको सेम ही मिल रही है, और रोटेशन बेसिस जो भी जैसा भी है, सो कोई ना कोई वेन्यू पे आपको उस टाइप का पिच मिलेगा ही जो इंडिया को भी मिल रहा है। सो दैट्स नॉट द केस। इवन हमने बॉल्स का सुना था कि इंडिया जब बॉलिंग करने आती है तो उनको बॉल्स अलग देते हैं कुछ, तो सो अगेन दैट cannot be true, of course that cannot be true, so ICC don't even make sense, it doesn't make sense, और ये world event है, ICC is the host, so how can you say कि BCCI अगर ऐसा दे रहा है, so you can't really say that ICC is the host, और ऐसा नहीं होता है, मतलब वर्ल्ड लेवल टूर्नामेंट में ऐसा कैसे हो गया। Right. Even I remember this one instance. So like जब कोई अच्छा खेलता है तो people say ना sometimes कि अरे वो सामने वाले की गलती है, उसने ही ढंग से नहीं खेला। ऐसा नहीं हो सकता, जिसने अच्छा खेला है वही अच्छा खेला है ना। हो सकता है कि हो सकता है सामने वाला ठीक ही खेल रहा हो, बट जिसने जीता है वो गेम उसने ज्यादा अच्छा खेला। इट्स ओके, you have to accept it. You cannot just simply give any reason because you want to sound logical and you have to give some reason over it. Just accept it. That's how it is, and that's how we can see it, because as far as we know Indian pitches, the Indian games and everything,
the variety of the Indian pitches which shows if you go to Dharamsala, you'll get some other wicket. If you go to Delhi, you will get some other wicket. You'll go to Kolkata, you'll go to Chennai, you'll go to Bangalore. All are different from each other. I think जो variety इंडिया में आपको मिलेगी और उसके बाद अगर आपको ये लग रहा है कि there is something else which India is doing, no, it's not. We are very much habitual of this. And हमें इस तरीके की pitches मिली है कि we know this game कि हमें कैसे अपने game को turn करना है. So I think this is the best event ICC can really host it anywhere because जो variety मिलेगी वो शायद आपको कोई और country provide नहीं कर सकती. But इंडिया की clay ही change हो जाती है, soil ही change हो जाती है और उसके बाद में आपको changes देखने को मिलते हैं. So that's how it is, and I think it's high time to accept it and stop putting questions over this tournament because this is like really beautiful tournament. Nothing is going wrong in this except the mindsets. So I'm going to take you to the social tracker event as well, जहाँ पर हम share करेंगे आपके साथ viral tweets जो कि इस मुकाबले को लेके हो रहे हैं viral. Since there is no such problem in both the teams, there is nothing to discuss and show concerns over or to give suggestions to them. Just keep doing whatever you feel like is doing for both the teams. That is my answer to them. But do you want to tell anything to India and South Africa? Have anything went wrong for them in this tournament? For South Africa especially? Both. Okay, so for India, I think India के लिए अगर एक चीज़ है, bowling में तो अभी ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, at least अभी तो नहीं दिख रहा है, but batting में थोड़ा हो सकता है कि when we are under pressure, तो कुछ अगर mini collapse कुछ हो गया, 2 या 3 विकेट फटाफट गिर जाते हैं and there are a lot of overs left, उस टाइम देखने लायक होगा कि how the low order or maybe the middle order then react, how they play. चेन्नई में जैसा हुआ था वैसा अगर कुछ होता है तो अगेन हाउ दे प्ले इन दैट सिचुएशन वो थोड़ा देखने लायक रहेगा अभी एंड दैट कैन हैपन इन द सेमीफाइनल, हु नोज. तो वो भी एक बैटिंग का थोड़ा कह सकते हैं कि कुछ एक अनसर्टेनिटी हो सकता है उस सिचुएशन में. इवन बॉलिंग का अगेन we are having really good days. Every bowler is having a good day whenever they're coming out to play. But again, कोई particular situation में अगर semi-final में अगर कुछ होता है तो you never know. But there are very less chances of that happening right now as far as the bowling is concerned. South Africa के लिए South Africa थोड़ा they started really strong. काफी एक हद तक के अभी भी ऐसे फॉर्म में ही थे until today's game. जिस तरह से आज स्टार्ट हुआ, I think they probably didn't expect कि इंडिया ऐसा अटैकिंग फॉर्म में आ जाएगा. But they made a good comeback as well. तो मिडल में comeback अच्छा था, but again they leaked runs after the 30th. तो I guess उसके बाद थोड़ा लीक करने लग गए, रेगुलरली बाउंड्रीज आने लग गई. श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छा खेला. सो साउथ अफ्रीका के बॉलिंग को दे माइट हैव टू लुक एट इट कि ऐसे सिचुएशंस में कैसे कंट्रोल करें. एंड बैटिंग का तो आज क्या बोलूं, अभी मतलब इंडिया के बॉलिंग के अगेंस्ट ऐसे आ जाते हैं तो मे बी इट डेंट्स द पर्सन अदर ऑपोजिशंस कॉन्फिडेंस. But they have the capability, like they have got 350, almost close to 400 runs as well. So ऐसा तो नहीं है एक मैच पूरा खेल लिया तो कुछ प्रॉब्लम आ गया है, but they can be cautious about it, but they can back themselves as well. चलिए, तो दोनों ही टीम्स के ऊपर सजेशंस कंसर्न्स जो भी थे वो हम लोग बात कर चुके हैं. लेट मी टेक यू टू द सोशल ट्रैकर व्हिच इज अ वेरी ब्यूटीफुल अगेन इवेंट ऑफ आवर टुडेज लाइफ. लेट मी टेक यू टू द वेरी फर्स्ट ट्वीट ऑफ टुडेज सेशन. Most of us will go into depression for months if we don't win this World Cup. We can't lose this, man. This is our World Cup. And he's like right as well. Because we can't really take it. अभी इसके बाद अगर हमें मान लीजिए कोई भी झटका लगता है, so not going to be like great for the Indian fans. Because this is something which we cannot really accept. India defeats South Africa by 243 runs, 100 for Virat Kohli, 5 wickets from Jadeja. The pictures you can see, everyone is so happy, and the performance they have given, they should be happy because this was a completely dominating show from them. King Kohli with another man of the match award. This looks really beautiful because he has scored his 49th ODI 100, scored his 79th international century, and holding a man of the match award on his birthday. This is such a special day for all the Indian cricket fans. Most consecutive wins for India in World Cup. In 2023, we have matched the number of 2003 World Cup as well. But that did not went well for India. But this World Cup looks very well going for India. And in 2015, the second most streak we have maintained, that was 7 in 2015. And in this World Cup, let's see how far we go. And the last tweet of the day, that's how Team India rule. And we can see the picture, the India team sitting on the throne and other teams around it, and the dominant show shows itself कि actually India team किस तरीके से राज करेगी या करने वाली है या जो भी है.
बट आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम टुडे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी विजीत. कल हम लोग फिर से लौटेंगे और बात करेंगे क्रिकेट के बारे में और जानेंगे कि वर्ल्ड कप में ऐसा क्या है जो हमारे लिए बाकी रह गया है, और मुकाबले और उनके बारे में सभी नंबर्स देखते रहिए क्रिक ट्रैकर.